Hello, everyone. So, this is just a quick video on the market, right? So, over the last 2 weeks, the markets, the small cap index especially, is down by almost 10-11%. And individual stocks in the small cap and mid cap space are down almost 20-25%. सो अ लॉट ऑफ पीपल जो मार्केट में नए आए हैं या जिनको स्टॉक मार्केट में आए हुए 1-2 साल ही हुआ है, जिन्होंने क्रैश नहीं देखा है, सो दे आर ऑब्वियसली वेरी वरिड एंड थोड़ा-सा डरे हुए हैं, थोड़ा-सा पैरानोया है कि भई एकदम से 2 हफ्ते में जो है हमारे पोर्टफोलियो 20% कम हो गया। सो दिस मैसेज इज़ फॉर देम, सो हाउ शुड यू रिएक्ट टू सच अ मार्केट सिचुएशन, राइट? तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल अंदाज़ में समझाना चाहता हूँ कि जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस और आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए? यू नो तो आप ये समझिए कि जब आप ज़मीन खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया जो ज़मीन खरीदते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही खरीदते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा भी किसी के पास पैसा आता है, तो वो रियल एस्टेट खरीद लेते हैं, व्हिच इज़ कंप्लीटली फाइन। लेकिन आप ये देखेंगे अगर किसी ने ज़मीन खरीद ली, मान लीजिए 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, तो वो ज़मीन खरीदते हैं और सोचते हैं कि भई मैंने आज 50 लाख की ज़मीन खरीदी है, मैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इसको 1 करोड़, 1.5 करोड़ में बेच दूँगा। या मैंने 20 लाख की ज़मीन खरीदी है, जो 4-5 साल बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं 20 लाख की ज़मीन 30, 35, 40 लाख जो रेट चल रहा होगा, उस वक़्त उतने में बेच दूँगा। ये सिंपल सा थॉट प्रोसेस होता है ना? अब वो ज़मीन खरीदने के बाद वो इंसान रोज़ चेक नहीं करता कि उसकी ज़मीन की जो वैल्यू थी, वो कितनी हो गई, है ना? ही विल नॉट चेक एवरी डे कि वो 20 लैक्स जो है, वो आज 20.1 लाख है, 20.2 लाख है या 19.5 लाख है। जो 5-10% का जो फ्लक्चुएशन ऑन अ मंथली बेसिस स्टॉक मार्केट में आता है या 2% 3% का फ्लक्चुएशन ऑन अ डेली बेसिस आता है, that is irrelevant if you look at it from the perspective of someone who buys a piece of land और who buys a piece of property। वो रोज नहीं चेक करता कि उसका जो है कैसा चल रहा है रेट मार्केट में, है ना? वो मोटा मोटी समझता है कि हाँ भाई 3-4 साल में पैसे डबल हो जाने चाहिए या 5 साल में पैसे डबल हो जाने चाहिए। तो विच बेसिकली ट्रांसलेट्स टू अ केगर ऑफ अराउंड 20%, 20-25%, राइट? सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन, तो जब हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो हम पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो पैसा किसी हवा में नहीं लग रहा, वो पैसा किसी फैंटेसी में नहीं लग रहा, बल्कि यू आर बाइंग रियल कंपनीज which are selling real products and services in the market. you know that is what you need to understand. So just like a land which in itself has no economic value unless you actually do something on it, a property in itself has no economic value unless you do something with it, कोई उसमें रहे या उसमें कोई कोई एक्टिविटी हो, तो उसकी वैल्यू, वरना अपने आप में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? बट यू कंपेयर इट दैट विद अ स्टॉक. So stock is basically a company which is every day selling its products and services. आपने सिप्ला खरीदा तो सिप्ला रोज हजारों दवाएं बेचता है ना? आपने टीसीएस खरीदा तो टीसीएस हजारों लोगों को एम्प्लॉय करता है ऑन अ डेली बेसिस और बड़ी-बड़ी कंपनीज को सर्विसेज देता है. So obviously your investment in stock market will provide you with a very common sense approach. It is supposed to provide you with higher returns than just real estate, with higher returns than just commodities, or at least on par with it, right? But you need to act rationally. You need to treat it as a long term asset, है ना? अगर ज़मीन की वैल्यू 4 साल में डबल हो रही है या 3 साल में डबल हो रही है, तो जो कंपनीज़ उस ज़मीन पे काम करती हैं और उस ज़मीन पे रहने वालों को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ बेचती हैं, उसकी भी तो वैल्यू 3-4 साल में या 5 साल में डबल होनी चाहिए ना, अगर आपने कंपनी अच्छी खरीदी है। So दैट इज़ हाउ यू शुड लुक एट इट। अगर 1-2 महीना प्राइस बहुत ऊपर चला गया या बहुत नीचे चला गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दैट इज़ इर्रेलेवेंट। You should not check prices on a daily basis or even on a weekly basis, right? What you should worry about is the quality of your investments, the quality of the management that is running those companies, right? And if those things are intact, if that thesis is intact, then you don't need to worry about other things. That is how you should look at investments.
और अभी जो मार्केट गिरा भी है ऑनेस्टली कोई ज़्यादा तो गिरा नहीं है। 10-15% का करेक्शन कोई करेक्शन नहीं होता है। ये तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, यू नो। सो फॉर ऑल दोज़ हू आर इन्वेस्टिंग विद अस एंड ऑल्सो अदरवाइज़, my message to them is, just stay calm, to use this opportunity to learn more about the companies which are there in our portfolio. uh, anyway, our portfolio has done phenomenally well over the past 12 months, with so many stocks giving more than 100% return, uh, or around 100% returns, or 50% returns. Like most of the stocks which we have held for, last 1 year, 6 months, 7 months, have done well. uh, so, and on a portfolio level, if you have 15-20 stocks, उसमें से अगर 3-4 अच्छा नहीं भी कर रहे लेकिन बाकी 15-16 stocks अच्छा कर रहे हैं, तो on a portfolio level you're still up. So there's nothing to worry about. And if you're new to investing, if you just started investing 1 week ago, 2 weeks ago, 1 month ago, then I can understand that your portfolio might be in a little bit of loss. But there is absolutely nothing to worry about. This is completely normal, completely normal, uh, so over the long term, we are very bullish on the market. We are very, very bullish on the companies that we hold, and you should use this downturn in the market as an opportunity to buy more. You don't have to buy more tomorrow, लेकिन let's say market अगले 3-4 महीने या अगले 5-6 महीने अगर डाउन ही रहता है, तो ये आपके पास अच्छा मौका है टू इंक्रीज योर होल्डिंग्स। अगर आप हर महीने अपने सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं, तो यू कैन कीप बाइंग एवरी मंथ एट चीप प्राइसेस फॉर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स। तो आप ये देखिए कि आपका सस्ते में कितनी खरीदारी हो सकती है आपके, लाइक व्हेन द प्राइसेस आर लो, यू कैन बाय सो मच, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए का है and you invest, let's say, 50,000 every month, so you can increase this 5 lakh portfolio to, let's say, 8 lakhs, 9 lakhs over the next 6, 7, 8, 9 months, right? तो आपका जो एवरेज प्राइस है स्टॉक का, बाइंग प्राइस, वो कितना नीचे आ जाएगा। सो व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स रैलिंग अगेन, सो यू विल स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम अ लोअर प्राइस बेस। सो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी ज्यादा होगा, बिकॉज आपके जो ओवरऑल बाइंग प्राइस है वो नीचे आ गया। तो अब जब वो वहां से बढ़ेगा, तो अगर वो नॉर्मल रिकवरी भी कर ले, तो उसी में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा, और फिर वहां से ऑब्वियसली इट्स सपोज टू गो हायर। So just use this opportunity to buy more. There's absolutely nothing to worry about. And instead of worrying too much about percentages कि भाई 20% रिटर्न आ रहा है या 16% रिटर्न आ रहा है, 21% रिटर्न आ रहा है, यू नो उससे ज्यादा आप इस बात की वरी करिए कि आप अपना पोर्टफोलियो साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। इफ योर पोर्टफोलियो साइज इज 10 lakhs, यू शुड प्लान कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 20 लाख कैसे कर सकता हूँ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, देन यू शुड वरी कि मैं 20 से 20, 25, 30 lakhs कैसे कर सकता हूँ, 35 lakhs कैसे कर सकता हूँ, because that is something which is in your control. Maybe you can earn more, maybe you can save more, you can invest more, that is what you should worry about. मार्केट 16% रिटर्न देगा या 18% देगा या 20% देगा, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हम तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनी खरीदें, एंड वी सिट ऑन इट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, एंड द मार्केट विल डू इट्स थिंग नेचुरली, और कंपनीज विल परफॉर्म, you'll get a return, राइट। लेकिन अगर आपको लेट्स से 20% मिला रिटर्न, और आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो आपको 2 ही लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो और 20% रिटर्न हुआ, तो आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। अगर आपको 50 लाख का है, तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। सो दैट इज अल्टीमेटली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मनी मैटर्स। अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि आपने पैसा ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस कितना बनाया। So what you should worry about is increasing your portfolio size, is increasing your investments, and have a very systematic approach to it। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस, इन्वेस्ट ऑन अ वीकली और क्वार्टरली बेसिस, whatever works for you, and again there's nothing to worry about। So that was my short message for what to do when markets are crashing, and take care।